सो टुडेज टॉपिक जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स. Based on the insertion of floral leaves with respect to ovary, we have several conditions. One condition is hypogynous condition. Second condition is perigynous condition. The third condition is epigynous condition. Epigynous condition. When coming to the hypogynous condition, जब हम hypogynous की बात करते हैं, by hypogynous we mean hypo means below. Gynous means ovary. That is, all other floral parts, petals, sepals, and stamens are situated below the level of ovary, and ovary is occupying the top position. That is, ovary is superior, and the flower is called hypogynous flower, while the condition of the ovary is called ovary is superior. Superior. Ovary is superior, and we have several examples in the field where we can see such condition. For example, in mustard, in China rose, in brinjal, we have such conditions. या अगर इस बनावन ते तो बनव में ताना यानी drawing it like it, that is, this is the thalamus, and on it the floral leaves, floral whorls are attached. For example, this is the sepal. Above the level of sepal there is petal, and above the level of petal there are stamens, and above all these is the ovary. That is, ovary is the basal swollen part of the carpel. So this condition, ovary is superior and all other parts of the flower are inferior. أسۍ چھِ یہِ condition ہاوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ taxonomy کران چھِ और taxonomic description में floral फार्मूला में हम सुपीरियर ओवरी को ऐसे दिखाते हैं. ओवरी गई जी gynoecium, and we place a bar under it. That is, ovary is occupying the top position, and this condition is called the superior ovary or the hypogynous condition. Now coming to perigynous. अगर हम perigynous का literal meaning निकालेंगे, peri means around, gynous means ovary. That is when floral parts other than the ovary surround the ovary. That is, ovary is at the level of all other floral parts. We call this condition as perigynous condition. And how this perigynous condition looks like. For example, यहाँ पे हम पढ़ेंगे in it thalamus जो है, it grows upwardly and form a cup-like structure. And gynoecium जो है, it is situated in the center, and other parts of flower are located on the rim of the thalamus, almost at the same level of the ovary. So this condition is called perigynous. That is, ovary is at the same level of other floral parts. ये thalamus थोड़ा thalamus को यहाँ पर floral parts insert गसन, जहाँ पे floral parts insert हो जाते हैं, और on the thalamus, brim of the thalamus, यानी ये जो thalamus की rim छ आसन, उस पे floral insertion occurs. Floral parts of flower are inserted like sepals, like petals, like stamens, and all these parts attain the level of the ovary. So this condition we call as, what we call this condition as? We call this condition Perigynous. perigynous condition. And the ovary here is said to be half inferior or half superior. أسۍ چھِ اَتھ condition وَنان half inferior condition. या वनहोस half superior condition. So we have example like plum, we have peach, we have rose. अगर तो generally थयो याद, this type of condition of ovary is present in some members of family Rosaceae. Now we have the third condition, that is the epigynous condition. In epigynous condition, coming to the literal meaning of epigynous, epi means above, gynous means ovary. That is, all these conditions are with respect to the position of the ovary with in comparison to or with respect to other parts of the flower. Now, when we talk of epigynous condition, यहाँ पे क्या होता है? The margin of the thalamus grows upward. Yus zan thalamus छ यथ पेठन insertion छ गसन of floral parts, ये छ इसका margin थोड़ा upward grow हो जाता है, and enclosing the ovary completely. And sitting yes ovary छ आसन carpal basal swollen part. Ovary is completely surrounded, and this thalamus gets fused with this ovary. ये छ at ovary sitting fuse गसन. The other parts of flower arise above the ovary. Yum zan baki parts of flower छ तिम छ पत नेरन ovary पेठ. They
arise above the level of the ovary, and sepal, petal, stamens appear to be situated above the level of ovary. So here the ovary attains the inferior position. Ovary गई बाकिन लेवल बोन, that is ovary की level बाकी parts of flower से नीचे जाती है. So here the ovary is inferior and other parts of the flower are superior. So while writing the taxonomic description in floral diagram, we can write it as a capital G पेट था हुआ थी बार, इसके ऊपर बार रहेगा. So ovary is below all other parts of the flower. इस condition को हम epigenous condition कहते हैं, and it is present in many cases, and we can see it in field like in guava, cucumber, and ray florets of sunflower. We know that sunflower is a composite inflorescence where it is a head or capsulum, where we have two types of florets. One is the disc floret and the other is ray floret. There in the Great. ray floretes, we have this epigynous condition. That ray floretan में आसन कौन condition? कौन सी condition? Epigynous condition. Epigynous condition. Now Epigynous. coming to next topic. These are the diagrams where we can see tissue diagram. Number A. अगर आप if we look closely at this diagram A, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है the ovary is सुमेरा आप बताओ ovary क्या पोजीशन कर रही है? Ovary is Superior, sir. ovary is To above other all part. other parts. The lowest part is sepal calyx, second part is corolla, and third part is the stamens or androecium. All these three parts are below the level of ovary. Ovary is superior, and so this condition is called hypogynous condition. Now coming to the in between condition, second condition B and C. यहाँ पे क्या है? जो thalamus है, it has grown a bit Cup. ये जो cup like structure बनी है, and at the brim of this thalamus we have sepals, we have petals, and we have stamens. So they appear to surround the ovary. So ovary is at their level. This condition we call as perigynous, and technically it is called half inferior. Superior. Superior. You remember half inferior. In literature we have half inferior, and there isn't a half superior. So we can say it is a half superior, but in taxonomic description as we see the term half inferior. Now coming to this condition C as well. This condition and this condition are almost same. ये थसन च थोड़ा थैलामस साइड पे निकला है, but all parts are at the level of the ovary, and this condition is called the perigynous. Now we have ultimate condition, that is the D condition, wherein the thalamus has risen above the level of ovary. Ovary is below the other parts of the flower. यहाँ पे sepals है, this is petal, these are stamens, and all the three parts are above the level of ovary. So we call this condition as epigynous condition. Ovary is being below the level of all other parts. So we call this type of ovary as inferior ovary. And when we write it in floral diagram, we floral formula, we write it below the bar. ओरी थर्म जी जी मैंने सब इस बार के नीचे रखा. This bar represents the level of other floral parts, and G is below them. So we call this condition as what we call this condition? Epigynous condition. Epigynous condition. Coming to the next part of the topic, we have these terms. यमन दिमो इस जल्दी जल्दी नजर जल्दी दिमो नजर. अभी तक आया सारा समझ आओ ना? Yes, sir. Yes, sir. Bracts are specialized leaves present in the axis of the flower. We have bractate condition, that is when flower is having bracts. We called it as bractate condition. And when there isn't a bract, we have ebractate condition. Now, involucre. What is involucre? The whorl of bracts surrounding the peduncle is called involucre. अगर ब्रैक्ट आसन वारिया पद बनायन यम
अख वर्ल जिस तरह हम सनफ्लावर में देखते हैं हेड और कैप्चुलम में, तो उस सनफ्लावर में जो नीचे वो सेपल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दे आर एक्चुअली द ब्रैक्ट्स एंड देयर वर्ल constitutes the involucre. Now we have involucell. Involucell क्या होता है? Group of bracteole is called involucell. ब्रैक्टन हुन ग्रुप, ब्रैक्टस के ग्रुप को हम इन्वोल्यूकर कहते हैं एंड ब्रैक्टियोल के ग्रुप को हम इन्वोल्यूसल कहते हैं. ब्रैक्टियोल्स क्या है? दे आर स्मॉलर देन ब्रैक्टस. यम छ आसान यूजुअली ऑन द पेडिसल्स ऑफ फ्लावर्स, while the bracts are on the floral axis, that is at the base of the inflorescence. Now spathy. Yem satan varia inflorescences padi, we came across sympathy. What is sympathy? In flowers, when large bract completely enclose the whole inflorescence. यानी जब ये ब्रैक्ट बड़ा एक ब्रैक्ट पूरे इन्फ्लोरेसेंस को एनक्लोज करता है, दैट ब्रैक्ट बिकम शोई, यानी इट लुक्स लाइक द पेटल, it becomes colored. So this type of bract is called sympathy. For example, we have this bract in banana, we have this bract in this maize. Now we have another condition, petaloid bract. If we come to the literal meaning of petaloid bract, petaloid bract means petal-like bract. When the size of bract of flower is greater than the size of the flower. Yani when bract becomes too much massive, it becomes the bigger size of the flower. And these are of various colored, the different colored, and these become petal-like. So we call these bracts as petaloid bracts. For example, bougainvillea. Bougainvillea में जो बाहर वाला इस वहाँ पे जो शोई अट्रैक्टिव कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, that is not petal, that is actually petaloid bract. That is bract becoming petaloid. Now we have glumes. Glume is important diagnostic character of these poaceae family, grass family. Grass family को हम poaceae कहते हैं, and poaceae is alternative name of gramineae. Gramineae we use in taxonomic literature, Nomen conservatum. That is, 8 families have retained the old names which are so widely used that we prefer to use them instead of they having the modern names. One of the families is Gramineae family, जिसका alternative name है Poaceae family, because as per nomenclature rule, the family ending should end with ACEAE. Also, Poaceae fits well to this Poaceae. Poaceae fits well. This Poaceae family is alternative name of Gramineae. अतः से वनन Gramineae ते. We have examples of this family. Wheat है, grasses, हमारे ये paddy है, maize है. Now, what are glumes there? ये जो ग्ल्यूम्स है, दे आर स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट्स. इनको हम क्या कहते हैं? ग्ल्यूम्स. अगर आप वीट की इन्फ्लोरेसेंस निकालेंगे, वीट का फ्लावर निकालेंगे, यू कैन सी द ग्ल्यूम्स देयर. यम छ आसान, दे आर स्मॉल, दे आर ड्राई एंड दे आर वेरी डेलिकेट स्केली ब्रैक्ट्स. इनको हम ग्ल्यूम्स कहते हैं. अगर कल को यू गेट ए क्वेश्चन व्हाट ग्ल्यूम्स एक्चुअली आर मॉर्फोलॉजिकली, व्हाट आर दे आर द bracts. What glumes are? They are bracts and are found in where they are found? They are found usually in the members of family Poaceae. Poaceae, exactly. Now coming to the next part of our today's lecture, we have CALYX. We have CALYX is the whorl of flower, and we have different patterns of CALYX. We have different morphologies of CALYX. So taking CALYX as a separate topic, we can deal it with as it is the outermost whorl of flower. And when we refer with respect to the sex of the flower, calyx is not essential whorl of the flower. It is involved in the reproduction of flower indirectly, not directly. Each member of this whorl is called sepal, and it is the outermost whorl of the flower. And mostly, it is more like leaves than any other member of the flower. यानी पेटल्स के कंपैरिजन में, स्टेमन्स के कंपैरिजन में, गाइनोशियम और कार्पल्स के कंपैरिजन में
कैलेक्स के जो members है sepals, they are more like leaves than other members of the flower. And when all sepals are free from each other, then it is called a polysepalous condition. Because we have so many patterns of arrangement of these sepals. And to know those patterns of arrangement of sepals becomes very important character in taxonomic description and identification of plants. So it is incumbent on us to learn different calyxes present in various types of plants. ये जो पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है, व्हाट इज मेंट बाय पॉलीसेप्लस कंडीशन? रमेश साहब आप बताओ, पॉलीसेप्लस कंडीशन क्या होती है? आप जल्दी करो, पॉलीसेप्लस कंडीशन क्या होती है? सुमेरा आप बताओ, Yes, sir. पॉलीसेप्लस कंडीशन क्या होती है? व्यान? पॉली पॉलीसेपलस का मतलब होता है जब एक फ्लावर में सेपल्स जो होंगे वो फ्री होंगे एक दूसरे से, अटैच नहीं होंगे। मगर That's one of यहाँ पे poly. है ना पॉली, हाउ इट रेफर्स टू sepals being free? Why here is poly in the term polycephalus? Attestation show the why it isn't a free sepalus. Polycephalus क्यों है? कोई अनम्यूट करके मुझे बताए, एनीवन। अच्छी प्राइज, इसमें चॉकलेट एक प्राइज है। उज़मा जान को कोई मैसेज करे कि शी इज नॉट कनेक्टेड। उज़मा जान हैज ऑलरेडी ज्वाइंड, बट शी हैज नॉट ज्वाइंड थ्रू ऑडियो। उज़मा जानस अगर का मैसेज कर है। अफसा, Yes, sir. आप बता मुझे, पॉलीसेप्लस में पॉली कैसे हो बन जाता है फ्री सेप्लस? Sir, when all the sepals, yel sari sepals free asan panway. Like tam mech. पॉली क्या जाता सन पॉली? There पता are कर दो many फिर, sepals. पता More कर दो फिर। sepals. Ano sa various sepals? There are many यू आर sepals. यू आर वेरी नियर टू द आंसर। पॉली हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं ये वारियस सेप्लस आसन, मगर तिम आसन पर थ्री। Good. Here, Free from each other. poly has two connotations. That is, sepals are many, and when there are sepals many, we then can refer to the term free or fused. When there is only one sepal, there's no need of calling it free or fused. So, polysepalous condition will arise only when there are many sepals and all the sepals are free. And we can Free see this from each condition other. in crucifery family. आत्मा crucifery family में crucifery is crucifery का alternative name है brassicaceae. So crucifery Yes. 2, I like the Gramineae, is one of the 8 families which is used in nomenclature as nomen conservatum. We use it more frequently. So we have this mustard radish सुमेरा को पता है radish क्या गई? Yes, sir. Muj. radish कई वन मुझ गई? Muj. हाँ, मैं शुनी याद रोजन क्या radish और वो क्या ब्याक टर्निप। Turnip. When Cabbage. another condition, when sepals are fused. So when we talk sepals refers to many sepals, and when the condition is they are fused, it is called a gamosepalous condition. क्या छस वनन? Gamosepalous condition. For example, it is present in cotton, it is present in datura, it is present in brinjal. ब्रिंजल में हम रोज देखते हैं जब भी किचन गार्डनस में गसन, तब ब्रिंजलस में सेपलन हुन ट्यूब हूँ, सेपल्स का एक ट्यूब होता है। तिम सेपल पे फ्री, मगर वन तिमो अख ट्यूब बनोमुत, वहां पे कोरोला ट्यूब भी होता है। So this condition is called gamosepalous condition. To gamosepalous condition, we can also call it as syncephalous. क्या बनोस? Syncephalous. आप सारे बताओ syncephalous. Syn means fused. इस पे जिस तरह हम पढ़ते हैं सिनगामी, सिनगामी यूजुअली एल्गियस में पढ़न, व्हेन गैमेट्स फ्यूज टुगेदर, सिनगामी को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एंड व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड वी कॉल दिस कंडीशन एज syncephalous, and we have several examples in CALYX Musainda. One of the sepal enlarge and form a leaf-like structure.
see the variations of these floral parts in the plant kingdom, in the angiosperms, because angiosperms are the only plants that produce flowers. So we are concerned with the angiosperm morphology. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मुस्सा इंडा. इसमें क्या है, one sepal is very large and that has become leaf like. It can be white or it can be brightly colored. It has attained the role of attracting insects, so it has become an agent of pollination. Thus, it serves as an advertisement flag. अगर कल को आपको किसी एग्जाम में ये आएगा कि what is meant by advertisement flag, and quote an example with respect to morphology, we can say that the advertisement flag is actually a large sepal which has become leaf-like, and it can have many colors, different colors, and it acts as an attract for insects. So it advertises its presence, that is the presence of the flower. So it acts as the advertisement flag. आवा समझ? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. We have another. मैं फिर से बोलूं तो ये सुन, शायद आपको समझ नहीं आया शायद. No, sir, आया समझ. रिपीट करता हूं मैं. मुसा इंडस्ट एक एग्जाम्पल है. वहां पे कैलक्स में एक सेपल बड़ी हो जाती है एंड दैट सेपल बिकम्स लीफ लाइक, and it can attract insects and attain many colors, so it becomes an advertisement agent for this flower. So it is a flag which we call as advertisement flag. Now we have another example in trapa. Calyx जो है, it is modified into supines and helps in protection of fruit. यानी calyx remains persistent with the fruit. Otherwise fruit में जो floral parts होते हैं, they are shed before the fruit is formed. But sometimes फ्रूट के साथ कुछ फ्लोरल पार्ट्स रहते हैं. मसलन आप घर में टमाटर खाते हैं, टोमेटो में एक वो परसिस्टेंट कैलेक्स रहती है उस फ्रूट के साथ. तचासन तालसो कैलेक्स सेपलस. इसी तरह ट्रैपा में कैलेक्स जो होता है, दैट इज मॉडिफाइड इनटू सुपाइनस. जो थिन थार्क एपिक पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या रोल करते हैं? दे हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ, Fruit. they help in the protection of fruit. So this condition we call as the sepals have modified into spine-like structures. Now coming to another part of this topic, we have another example. In ergemone, spines are present on the surface of sepal, which protect the flower bud. Yani these are various variations of the calyx. Now in lark-super and balsam, posterior part of the sepal is modified into narrow tube, and this structure is called as sepal super. इसी बुनियाद पर इसको हम लार्क सुपर भी कहते हैं. यानी कल जब हमने पढ़ा था, एस क्या पढ़े और रात, एस पढ़े और रात मैं तो पे तो पोस्टीरियर पार्ट था, एंटीरियर पार्ट, जब वो सुमेरा ने ग्रुप में डाला था. पोस्टीरियर पार्ट को सु पार्ट ऑफ फ्लावर, जहां वेयर द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज अटैच्ड, दैट एंड इज कॉल्ड पोस्टीरियर एंड, एंड द एंड अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड इज कॉल्ड एंटीरियर एंड. तो छोर रातों की याद. यहाँ पे क्या है, इसमें क्या लार्क सुपर एंड बाल्सम में क्या हो जाता है? रमेश साहब अटेंडेंस कर लेना. रमेश साहब अटेंडेंस कर लेना, 10 मिनट रह गए. जी सर. लार्क सुपर एंड बाल्सम में क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेपल. अगर हम देखिए बनावन सेपल, 1 मिनट बकरा तो ऐसे ये शेयर, मैं शेयर करता हूँ वाइट बोर्ड. आया वाइट बोर्ड आया? Yes, sir. ये थैलामस ये यह पैटर्न, इस पे इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स हो जाएगा.
और आउटर मोस्ट वॉरल जो है दैट इज सेपल. Sepals go, this part is called anterior part, and the part which is attached to this stalk is called a posterior part. Posterior part. When this posterior part becomes modified into super-like structure, we call it as we call it as we call it as sepal super. क्या कहते हैं? Sepals. सेपल्स पर And in it nectar is stored for insect attraction. So here इसका जो फंक्शन है सेपल का टू स्टोर नेक्टर. हमें नेक्टरीज पढ़ने भी है, नेक्टरीज अटेंडेंस सब लोग करेंगे. कौन का डाउट? सी, ये है सेपल सुपर. यहाँ पे देखिए तो आवा है कि देखिए दिस इज सेपल सुपर. फिक्र तो रहा. ये एक प्रोट्यूबरन जैसी निकलती है, एक आउटग्रोथ जैसी निकलती है. आपको दिख रहा है? हेलो. यस सर. हाँ. Yes, sir. इसका इसका रोल क्या है आप सेल्फ सुपर का, सेपल सुपर का? टू प्रोवाइड नेक्टर टू द इंसेक्ट्स, to secrete nectar, to secrete. Nectar. देखिए सेपल सुपर ये पेटल जैसा बनता है यहाँ पे. दिस इज एग्जाम्पल इन लार्क सुपर, वहाँ जहाँ पे ये सेपल सुपर होता है प्रोटूबरनस. एंड जिस फंक्शन यहाँ पे देखो सेपल सुपर, इट इज फंक्शन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. तो वुचमुत ये आपने Insects. किसी ने देखा है लार्क सुपर? इसको भी कहते हैं इसीलिए वजह से लार्क सुपर, क्योंकि इसमें ये सेपल प्रोटूबरनस होता है. सेपल प्रोटूबरनस. नाउ इन एस्टेरेसी फैमिली, जिसको हम अल्टरनेटिव नेम में एस्टेरेसी फैमिली को हम कंपोसिटी, एस्टेरेसी फैमिली इज Yes. अल्टरनेटिव नेम ऑफ कंपोसिटी फैमिली. और इसको हम इंग्लिश में सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं. अथमन सनफ्लावर, एस्टर, वो एंथीमस कोट्यूला. सेपल्स जो यहाँ पे होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू हेयरी स्ट्रक्चर, एंड सच टाइप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड पैपस. आवाज समझ? ऐसे सेपल्स को क्या कहते हैं? Papus. ऐसे सेपल्स को क्या कहते हैं? पैपस. Papus. ये साथ जब आप पापा को याद रखेंगे, पाप ये याद रोजे, पापस तो रोज याद बने पापस. इट इज कॉल्ड पैपस. आपसे आप बताओ व्हाट इज मेंट बाय पैपस नाउ. अगर पगा उक नंबर क्वेश्चन आओ, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में फॉर एग्जांपल, या 3 नंबर का. Hair like means नहीं नहीं, here when samples become modified into hair like modified structure, hair. it is called a pappus, and pappus are found in some Asparaceae members of family. family Asteraceae. Asparaceae. Then what is pappus? Pappus is a modified calyx. And what is its role? Its role is in dispersal of fruit. It is how its role is in dispersal of fruit. When हम जब हम dispersal of fruit as separate topic पढ़ेंगे, there we will learn about how there are several agents that help in the dispersal of fruits. Now coming to the subtopic, that is duration of sepals. ड्यूरेशन ऑफ सैपलिज पे जब हम ड्यूरेशन ऑफ सैपलिज की बात करेंगे, बाय ड्यूरेशन वी मीन कि सैपलिज कितने देर रहेंगे ऑन द फ्लावर, ऑन द प्लांट. क्योंकि फ्लावर का एक्चुअल अल्टीमेट रोल होता है टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स, टू प्रोड्यूस
seeds. Fruit and Fruits and seeds. seeds. And you know, for formation of fruit, the ovary is involved. That is female part of flower, carpel. Carpel का जो basal swollen part. And formation of seed, ovary में ovules होते हैं. And those ovules are transformed into seed. So the important structures that can persist after reproduction is finished by the flower is the carpel part of this flower, and what is in the carpel, that is the ovules, those continue to remain there. But we have some instances wherein even sepals can persist with fruit, for example. And we have some situations where sepals fall immediately after the formation of or before the formation of fruit. अच्छा, कहाँ पहुंचे हम? Duration of sepals. Duration of sepals. We have caducus, we have deciduous, we have persistent. By caducus we mean sepals fall just at the time of opening of flower bud. यानी flower bud open होते ही sepals will fall, and this condition is called caducus. For example, poppy में. We may have several other examples as well. अगर हम मैंने आपको क्लास में एक बार बताया है कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड Anthesis. एंथीसिस. एंथीसिस, ये एंथीसिस एक्चुअली टर्म आई है एंथोलॉजी. एंथोलॉजी को स्टडी ऑफ फ्लावर्स. We have separate branch of morphology wherein we study only flowers. एंड फ्लावर्स का पढ़ना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉर्फोलॉजी में, बिकॉज फ्लावर्स फॉर्म द डायग्नोस्टिक एंड कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एंड सो दे सर्व ए वेरी ग्रेट एड in the taxonomy. Now coming to this deciduous, when sepals fall after pollination, pollination के बाद sepals गिर जाएंगे, this condition is called deciduous. Deciduous go pionti, it is deciduous plant and munch before the onset of winter leaves fall, and that condition is called a deciduous condition. But when sepals fall after pollination, we call it as deciduous. For example, mustard man. We have now persistent sepals. This is the extreme condition. That is, if sepals do not fall at all and they remain attached to the fruit. For example, मैंने अभी example दी थी टोमेटो में, कैप्सिकम में, कैप्सिकम, ब्रिंजल, कॉटन, दातूरा. Datura. We have less than 1 minute now. ये जो ब्रिंजलस में सोदुई सु कैलैक्स आसन नेबिर नोन, जब आप वो बैंगन को तैयार करते हैं फॉर कुकिंग, हम वो उसका जो फ्लावर का वो पेडिसल होता है उसको काटते हैं, बट एट द टॉप देयर इज कैलैक्स अटैच्ड टू द फ्रूट. इसी तरह टोमेटो में भी होता है, कैप्सिकम में भी होता है. सो सोलेनेसी के मेंबर्स में दिस persistent sepal being the important character. And sometimes below a calyx, a whorl of a whorl similar to sepal is found. That is called epicalyx. This is very important. यानी कभी कभार कैलैक्स के नीचे और एक वर्ल होती है, एडिशनल वर्ल टू द कैलैक्स. दैट इज नॉट एक्चुअली द कैलैक्स, उसको हम एपिकैलैक्स कहते हैं. लिटरल मीनिंग से एपिकैलैक्स का मतलब है कि इट इज एपिकैलैक्स अबव द कैलैक्स, दैट इज कैलैक्स के